Hello students, how are you all? I hope you all are fine and doing well at your home. Now again we will start our syllabus, and in history we have the sixth chapter, that is Maurya age, Chandragupta and Emperor Ashoka. Okay, in this chapter we are going to learn about the new age or new era, and what is the name of that age or era. So we have Maurya age. Okay, see the spelling Mauryan, Maurya age, and Chandragupta and Emperor Ashoka. Means generally we have to learn Chandragupta Maurya and Emperor Ashoka. So you all are aware about the name of Emperor Ashoka. Okay, I hope you all are aware, because as you know very well that on the currency notes, okay, and even on the coins we have one symbol, you can see here. So that is our national symbol and it is connected with Emperor Ashoka. So later on we will discuss on the same topic and same points in this video. So let us start that. So as it was Sunday, all the children of the society gathered in the ground to play cricket. What happened? It was a day of Sunday, and that is why all the children of the society gathered in the playground to play cricket. Means ऐसे कंडीशन है कि संडे का डे है एंड ऑल द चिल्ड्रन, मतलब जितने भी बच्चे हैं वो सारे सोसाइटी कैंपस जो है वहाँ पे क्रिकेट खेलने के लिए like they gathered. Bhavya and Jalp formed the teams. Now you know very well, as you want to play cricket you have two teams. Okay, so here Bhavya and Jalp both formed teams. Okay, means for the one team Bhavya is the captain and for the second team Jalp is the captain. Coin was tossed to decide bowling and batting. You know very well. Okay, generally if we are talking about IPL or one day or test cricket or every cricket, every form of cricket, so first of all you have to decide that what do you want to do, bowling or batting. So for that coin was tossed. Jalp said heads. Okay, what he said? So he said heads. Now say the coin fell on the ground, it was heads, मतलब उसने जो टॉस है वो जीत लिया. So Jalp asked for batting. So what they decided? They decided, means his team decided to do the bat first. Hetans asked, where do we find line figure on the coin? See, now you know very well, if you have the currency of 1 rupee or 2 rupees or 5 rupees, then you have one figure on the coin and that is the figure of lion. So we have to learn about that. So Bhavya explained to him the lion figure on the coin is heads. Means जहाँ पे heads होगा तो वहाँ पे कौन सा फिगर होगा? तो लायन का फिगर होगा. दिस लायंस फिगर हैज़ बीन एनग्रेव्ड ऑन द ह्यूज पिलर ऑफ सोमनाथ. तो लायन का फिगर कहाँ पे एनग्रेव्ड किया है? एनग्रेव्ड करना मतलब उसके ऊपर जो भी प्रोसेस करके ग्रेव्ड करना, एनग्रेव्ड करना मतलब एक स्टोन है उसके ऊपर बनाना, तो वो कहाँ पे है? सो ह्यूज पिलर ऑफ सारनाथ, सारनाथ का जो पिलर है वहाँ पे है. This pillar was built by Emperor Ashoka of Maurya dynasty. So who built this huge pillar of Sarnath? So that is very important. Emperor Ashoka. Emperor means Samrat. There is a huge difference between king and emperor. Okay. King matlab Raja and emperor matlab Samrat, king of king. India was recognized it as our national symbol. You know very well, as far as the national symbols are concerned, so this pillar of Sarnath, it is taken as our emblem. Okay, emblem of India. So who built it? So Emperor Ashoka of Maurya dynasty built it. Now from here we'll have to learn about Maurya dynasty. So first of all, founder and ruler. So who was the founder of Maurya dynasty and how he ruled, that we have to learn in this chapter. So first of all, Chandragupta Maurya, founder of the Maurya dynasty, 321 BC to 297. Now BC you know very well, before Christ. So who was the founder of Maurya dynasty? So from here the question is there. Chandragupta Maurya was the founder of Maurya dynasty. So Chandragupta played the games of king in his childhood. Means when he was
child. At that time he used to play the cricket games of kings. Generally we used to play like cricket and all that thing, okay, but he used to play the games of kings. तो ही वो फिर से क्या बने, किंग बने. His skill was noticed by Acharya Vishnugupta and he was trained by him in Shastra and Shastra. So who was his like Acharya? Acharya मतलब उसके गुरु कौन थे? तो विष्णुगुप्त. And he trained him in Shastra. शास्त्र मतलब वीपन्स कैसे चलाने हैं उसकी ट्रेनिंग दी, एज वेल एज शास्त्र मतलब जो नॉलेज है वो नॉलेज दिया, मीन्स शिक्षा दी. लाइक पहले के ज़माने में जो है वो वेदास जो है उसकी एजुकेशन दी जाती थी. तो हु गिव हिम एजुकेशन? सो विष्णुगुप्त. चंद्रगुप्त मौर्य विद द हेल्प ऑफ गाइडेंस ऑफ चाणक्य defeated last emperor of Nand dynasty, Dhananand, in 321 BC and took the throne of Magad and founded the Maurya Vansh. So it is very important. Before Maurya dynasty, which dynasty was ruled on India? So the answer is Nand dynasty. And who was the last king of Nand dynasty? So Dhananand was the last king of Nand dynasty. अभी चंद्रगुप्त मौर्य ने जो फाउंडर किया है, ओके, मौर्य डायनेस्टी का. तो द क्वेश्चन इज दैट कि किसकी हेल्प से? तो चाणक्य की हेल्प से. नाउ यू ऑल आर अवेयर अबाउट द नेम ऑफ चाणक्य, ओके, जिसको हम कौटिल्य भी बोलते हैं. इकोनॉमिक्स बुक है, लेटर ऑन वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर. तो उनकी हेल्प से जो नंद डायनेस्टी है उसके धनानंद को हरा के एक न्यू एरा है वो स्टार्ट हुआ. सी रिमेंबर वन थिंग कि पहले के ज़माने में क्या था, एक किंग होता था, अगर वो हार जाए तो उसकी जगह पे वो पूरा जो डायनेस्टी और एज है वो फिनिश होके और एक न्यू किंग है वो अपना जो राज है वो एस्टैब्लिश करता था. सो द सेम थिंग हैपन हियर ऑल्सो. चंद्रगुप्ता गॉट फुल बेनिफिट ऑफ Chanakya's skill in the politics and administration. From Arthashastra written by Chanakya, we got the information about political, economical and social life of the people of that time. See, with the help of Chanakya, चंद्रगुप्त ने क्या किया कि जो भी स्किल्स है, किसकी स्किल? सो पॉलिटिकल मतलब हाउ टू रूल और हाउ टू मैनेज, हाउ टू रूल. एडमिनिस्ट्रेशन मतलब मैनेजमेंट कैसे करना है, वो सारी चीज़ें किसकी हेल्प से उन्होंने सीखी? सो चाणक्य की हेल्प से सीखी. एंड वी कैन गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द मौर्य एज with the help of Arthashastra written by Chanakya. So from here also the question is that who wrote the book Arthashastra? So Chanakya wrote the book Arthashastra. Chanakya's diplomatic guidance played a very important role in Chandragupta's achievement. Diplomatic मतलब very important we can say. Okay, policy जिसको हम बोल सकते हैं. तो उनके हेल्प से, उनका जो नॉलेज था उसके हेल्प से चंद्रगुप्त मौर्य ने अचीवमेंट जो है वो हासिल की. चंद्रगुप्ता कॉन्कर्ड 4 टेरिटरीज. कॉन्कर्ड करना मतलब टू विन, जीतना. कौन कौन सी 4 है? सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. काबुल, कांधार, हेरात एंड बलूचिस्तान. ओके, सो विच 4 डायनेस्टीज यू हैव टू रिमेंबर और विच टेरिटरीज? सो काबुल, कांधार, हेरात एंड बलूचिस्तान. आफ्टर डिफीटिंग ग्रीक किंग Seculus Nicator, being impressed by Chandragupta's bravery, Seculus married his daughter Helena with Chandragupta and sent him as an ambassador Megasthenes to his court. So that is also very important. ये इंडिया का किंग है चंद्रगुप्त मौर्य, ओके, बट स्टिल ये जो ग्रीक किंग है वो किसको? सेक्युलस निकेटर, उसको हरा देता है. और उसकी ब्रेवरी से इम्प्रेस होके क्या किया? सेक्युलस ने उसकी जो डॉटर थी, व्हाट वाज द नेम ऑफ हिज डॉटर? सो हेलेना. तो हेलेना की जो मैरिज है वो किसके साथ करवाए? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करवाए. नॉट ओनली दैट बट ही सेंट हिज एम्बेसडर. नाउ हु इज एम्बेसडर? एम्बेसडर मतलब अ पर्सन हु रिप्रेजेंट द किंग. ओके, रिप्रेजेंट द किंग. अभी भी हम लोग गवर्नमेंट की बात करें तो उसमें एक एम्बेसडर होता है. तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एम्बेसडर? तो मेगास्थनीज. सी यहाँ पे जो स्पेलिंग्स हैं एंड प्रोनाउंसिएशन आर वेरी डिफरेंट, सो यू हैव टू बी वेरी मच अवेयर अबाउट इट. सो मेगास्थनीज जो है उसको चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट में भेजा. किसने?
सो सेक्युलर निकेटर ने, और उसकी डॉटर का नेम क्या था, हेलेना। उसके भी मैरिज किसके साथ करवाए, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करवाए। ड्यूरिंग ही स्टे इन पाटलिपुत्र, मेगास्थनीज wrote a book Indica which provide important and basic information about the capital and administration of Magad Empire. So it is also very important who wrote the book Indica. So Megasthenes wrote the book Indica. In this chapter you have lots of books and writers, and you have to remember each and every writer and particular book. So during his stay in Patliputra, now the question is that where was the Patliputra situated? So Patliputra was the capital of Maurya dynasty. हर एक डायनेस्टी का अलग अलग कैपिटल होता है. एट दैट टाइम Patliputra was the capital of Maurya dynasty. And who wrote the book Indica? So Megasthenes. Who was Megasthenes? So he was the ambassador of secular Nicator, okay, which provide us the important information about the capital. So which was the capital? So Patliputra, and administration of the Magad empire. मतलब मगध में कैसे रूल होता था उसकी इंफॉर्मेशन हमें ये इंडिका है उसके यूज से मिलती है. सो एक्सटेंशन ऑफ द स्टेट, एक्सटेंड होना मतलब कहाँ तक वो स्प्रेड हुआ था, मतलब उन लोगों का जो स्टेट था वो कितना था. सो दैट So Chandragupta tried to establish a sovereign power over the whole India by spreading his authority with the valor and diplomacy of Chanakya in other region of India. So he was tried to establish a sovereign. Sovereign मतलब supreme means alone. वो कहाँ पे अब पूरे, तो here you have the answer कि होल इंडिया में वो पूरा एक ही किंग हो, मतलब वो सुप्रीम किंग बनना चाहता था. And he wants to spread his authority and valor. So what is valor? Valor मतलब bravery, वीरता. And diplomacy, what is the meaning of diplomacy? So policy. तो किसकी हेल्प से? सो चाणक्य की हेल्प से अपनी ब्रेवरी और पॉलिसी का यूज़ करके वो पूरे इंडिया में सुप्रीम किंग बनना चाहता था. मीन्स ही वॉन्ट टू बी अ सिंगल किंग ओवर द होल ऑफ इंडिया. ओके, हु? सो चंद्रगुप्त मौर्य. He ruled in the north from, now that is very important, that's कहाँ तक उसका स्टेट है वो एक्सटेंड हुआ था. तो ही रूल्ड इन नॉर्थ फ्रॉम अफगानिस्तान, पेशावर, कंधार एंड बंगाल इन द ईस्ट. सो नॉर्थ की बात करें तो अफगानिस्तान एंड पेशावर, और यहाँ पे कंधार टू बंगाल इन द ईस्ट. ही एक्सटेंडेड हिज पावर इन 7 इन वेस्टर्न इंडिया, इवन इन वेस्टर्न इंडिया ऑल्सो. वेस्ट में भी उसने क्या किया था, अपना जो पावर है वो शो किया था. It is stated in some of the sources that he had his rule even in Saurashtra also. Means in some of the books we get the information that even he ruled on the places of Saurashtra. Where Saurashtra is situated? So in Gujarat. So in some of the book we got the information about that even he ruled in Saurashtra also. He had appointed Pushyagupta, a Vaishya Amartya as his governor. Now governor मतलब means what? कि एक किंग है वो दूसरी जगह पे अगर जीत जाता है, सो ही कैन नॉट एबल टू गो एंड रूल ओवर देयर, तो वो एक अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करता है वो प्लेस के लिए. तो यहाँ पे जनरली सौराष्ट्र में मीन्स गुजरात के लिए उसने एक गवर्नर अपॉइंट किया, एंड द नेम ऑफ दैट गवर्नर वॉज पुष्यगुप्त. ओके, नाउ सी व्हाट ही डिड. So Pushyagupta constructed Sudarshan Lake by constructing dam on the rivers flowing from Girnar mountain in Girinagar, Junagadh in Saurashtra. Okay, उसने वहाँ पे एक लेक बनाया, and the name of that lake was Sudarshan Lake. और वहाँ पे क्या किया, कंस्ट्रक्टिंग डैम्स भी बनाए, एंड इवन जो गिरनार माउंटेन है वहाँ पे गिरीनगर मतलब जूनागढ़ में वो सिचुएटेड है. यू कैन सी इट टुडे ऑल्सो. Okay, so that is very important. Who constructed Sudarshan Lake? So the answer is Pushyagupta. Okay, and where is it situated? So it is situated in Girinagar. Present, what is the new name of Girinagar? So Junagadh. And where it is situated? So it is situated in Saurashtra. Konkan, Karnataka, Maharashtra and other region of southern India were also the part of the Magad empire. So that is very important. Which places? So Konkan, Karnataka, Maharashtra and other region of the southern India, they were also the part of the Magad empire.
In the northwest, the territories up to western Gandhar, that is Afghanistan, were also under the authority of Chandragupta. So see, present it is called Afghanistan, but जो पुराना नाम है वो क्या था, गांधार. तो वो भी अगर आप इंडिया का मैप देखोगे तो ऊपर यहाँ पे पाकिस्तान है, फिर अफगानिस्तान आएगा. ओके, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ वो एरिया भी वो टाइम पे चंद्रगुप्त मौर्य के कंट्रोल में था. दस सॉवेरियनिटी मतलब सुप्रीमसी ऑफ द मौर्य एम्पायर वॉज प्रैक्टिस्ड ऑल ओवर द इंडिया. मीन्स जनरली इन ऑल ओवर द इंडिया किसका रूल था, तो मौर्य जो एम्पायर था उन लोगों का रूल था. Chandragupta spent the last time of his life with the Jain Muni Bhadrabahu in Shravanbelgoda on Mysore, now in Karnataka. So that is very important कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है उन्होंने अपना लास्ट टाइम कहाँ पे स्पेंड किया था, एंड विथ हुम. सो ही स्पेंड हिज लास्ट टाइम विथ जैन मुनि भद्रबाहु. जो जैन मुनि थे उसका नेम क्या था, भद्रबाहु. एंड वेयर, so Shravanbelgoda. So at that time it was a part of Mysore, but present it is in Karnataka. He died in 297 BC. Description about Chandragupta's 24 years rule over state and his adoption of Jainism in the last years of his life is found in Jain Puran. So that is also very important कि उन्होंने कितने years तक रूल किया. So 24 years तक. And he adoption मतलब उन्होंने एडॉप्ट किया था कौन सा रिलीजन, सो जैनिज्म. कब, तो लास्ट ईयर ऑफ हिज लाइफ, मतलब लाइफ के अंत में उन्होंने कौन सा जो रीजन है वो फॉलो किया था, सो जैनिज्म. एंड ही फाउंडेड जैन पुराण. और वो इंफॉर्मेशन हमें कहाँ पे मिलती है, सो दैट इंफॉर्मेशन वी गॉट फ्रॉम जैन पुराण. द हिस्ट्री बिफोर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मौर्य डायनेस्टी इन इंडिया इज कॉल्ड प्री हिस्ट्री. सो Maurya age, remember one thing, it is also considered as the golden age of Indian history, right? तो golden age of Indian history means Maurya age. तो उसके पहले की जो एज थी it is called the pre-history of India, जहाँ से हमें कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है. बट फ्रॉम मौर्य डायनेस्टी वी गेट द प्रॉपर इंफॉर्मेशन. The extract and the supporting information of Maurya dynasty is available from the various sources, and we get the proper information from so many books. The Maurya Empire established by Chandragupta Maurya with the help of Vishnugupta means Chanakya is said to be the first historical empire of India. I already told to you. Means from here we get the proper information. तो Maurya Empire है, इट वॉज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट हिस्टोरिकल एम्पायर. मतलब यहाँ से हमारी हिस्ट्री जो है इंडिया की वो प्रॉपरली स्टार्ट होती है. अर्लियर ऑल्सो प्री हिस्ट्री वॉज देयर, बट वी डोंट हैव द प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट इट. So I hope it is clear to you, but still you have any doubt, so you can write in comment box. So I'll try to solve your problems. And thank you for watching the video. Have a nice day.